Very good morning, students. I hope you all are just doing great in your studies and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 4, which is Adobe Animate. So let's understand this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is Adobe Animate, and the topics which we will discuss in this chapter are starting Animate, components of Animate window, creating a document in Animate, drawing tools, selection tools, coloring tools, and gradient fill. Now we have an amazing thought that learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Now we have an activity where we need to write name of 3 animated movies along with the name of main 2 characters played in it in the space provided. So हमें यहाँ पे मूवी नेम्स लिखने हैं एंड टू मेन करेक्टर्स हमें लिखने हैं. तो फर्स्ट इज Shrek, जहाँ पे हमारा जो मेन करेक्टर्स थे they were Shrek and Donkey. Then the next can be the Incredibles and the main characters is Incredible. Then the third one is Wall-E, and the 2 main characters are Wall. Now let's start. Kavya says, "Hey Mayank, how are you?" He replies, "Hey, I am good. What about you?" Then she says, "I am worried." Then he replies, "Why so?" She says, "I don't know anything about Animate." Then he replies, "Don't be panic. It is so simple. Adobe Animate is a multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe. And इसका हम यूज करते हैं to design vector graphics and animation for television series, online animation, website, game development, and other interactive projects." Then she replies, "Thanks, it has been really nice talking to you." He says, "You're welcome, and in this chapter, you will learn more about Adobe Animate." So, you have successfully animated an object on paper. In the same way, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एनिमेट सीसी, जिसका यूज किया जाता है टू एनिमेट इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर. तो एनिमेट सीसी एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसको एडोब ने डेवलप किया है. इसको यूज किया जाता है एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए, मूवीज को क्रिएट करने के लिए दैट कैन बी रन इन वेब पेजेस और ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क. ये प्रोवाइड करता है एक इजी वे ताकि हम क्या क्रिएट कर सके, एनिमेशंस को क्रिएट कर सके विद images, sounds, video, and action. So the making of cartoon movies and different animations with small steps to create full movie animation is possible in Animate CC. Adobe Animate Creative Cloud यानी कि CC is a software package जो allow करता है users को to create animated work. Using Adobe Animate CC, one can create interactive animations and vector graphics using drawing tools. Adobe Animate CC is now commonly used to create games, cartoons, websites, photo galleries and much more. जो animated cartoons होते हैं या movies होती है जो हम टीवी पे देखते हैं, वो example होता है animations का and vector graphics का. Animations and graphics created in Animate can be scaled to any size without compromising the clarity and quality. Now starting Animate start करने के लिए सबसे पहले हमें start button पे click करना है. Then click on Adobe Animate CC, click on ActionScript 3.0 under platform type selection, then click on create button to start working in Animate CC window. Now what are the components of Animate window? Animate window के कौन-कौन से components होते हैं? सबसे पहले हमारे को मिलता है मेन्यू बार. मेन्यू बार कंटेन करता है कुछ कमांड्स और फंक्शंस जैसे ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग फाइल्स. तो ये हमारी विंडो है. यहाँ पे हमारे को टूल्स पैनल मिलता है, मेन्यू बार, लाइब्रेरी पैनल, वी हैव स्टेज, टाइमलाइन एंड प्रॉपर्टीज पैनल. टूल्स पैनल के अंदर क्या होते हैं, ये जो बार होता है पैनल और बार ही कंटेन करता है कुछ सेट ऑफ टूल्स जिनको हम यूज करते हैं अपने ग्राफिक्स और टेक्स्ट को मॉडिफाई और क्रिएट करने के लिए. एंड वी विल नोट दैट फ्यू टूल्स हैव स्मॉल ट्राइंगल एट द बॉटम राइट एंड, जिसका मतलब होता है कि वहां पे कुछ हिडन टूल्स भी हैं. अ सब मेन्यू अपीयर होता है विद मोर सिमिलर टूल्स. स्टेज एक रेक्टेंगुलर वर्कस्पेस एरिया होता है जहां पे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स को प्लेस किया जाता है टू क्रिएट आवर ड्राइंग्स एंड मूवीज. टाइमलाइन को हम यूज करते हैं टू सेट द
सीक्वेंस ऑफ द मूवी, जो हेल्प करता है यूजर की टू व्यू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इट स्टेज ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज. प्रॉपर्टीज पैनल, यहाँ पे ये एक सेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स होता है एंड डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन फ्रीक्वेंटली सेट द एट्रीब्यूट्स. आप अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हो या डॉक्यूमेंट्स को, सच एज उनका बैकग्राउंड कलर, फ्रेम रेट, रूलर यूनिट एक्सेट्रा while working in Flash. Now create a document in Animate. हम एक document create कर रहे हैं Animate में, तो उसके लिए we need to click on File, then New option from the menu bar. एक New document dialog box open हो जाएगा. वहां से आपको select करना है Character Animation tab. Now click the Action Script 3.0 option from the Type section. Now set the dimensions for the stage by entering new pixels value. अब आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी है for width and height on the right side of the new document dialog box. Then click on create button, which is this. एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा इन एनिमेट सीसी. ड्राइंग टूल्स, देयर आर वेरियस टूल्स जो एनिमेट सीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर ड्राइंग. सबसे पहले आता है लाइन टूल. इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है इन अ क्विक वे. एंड ये जो लाइंस होती है ये क्रिएट होती है सिमिलरली एज इन अ ड्राइंग प्रोग्राम. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज लाइन टूल. तो सबसे पहले आप लाइन टूल पे क्लिक करोगे फ्रॉम द टूल बार, या फिर आप एल की का भी यूज कर सकते हो. सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे उसका कलर, स्ट्रोक साइज and line style as per your choice from the properties panel. Then click and drag the pointer on the stage. Release करना है अपना माउस बटन एंड आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ऑन योर स्टेज. नेक्स्ट इज कर्व लाइन. कर्व लाइन होती है लाइक दिस. जो स्ट्रेट नहीं होती वो हमारी कर्व लाइंस होती है. एंड फॉर दैट आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल एंड सेलेक्ट द स्ट्रेट लाइन आफ्टर क्लिकिंग एनी फ्री स्पेस. इट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है वो सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए बिफोर डूइंग स्टेप 3. So click on the selection tool, place the pointer on the line. When the pointer symbol gets changed into an arrow shape with the curve symbol, click and hold down the mouse button and drag the line. Release the mouse button when your curve line is made. रेक्टेंगल टूल का हम यूज करते हैं जब भी हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल्स को क्रिएट करना होता है एंड फॉलो सर्टेन स्टेप्स. Click on rectangle tool from the toolbar, then change the stroke color. Click on the stroke under the color and style section in the properties panel and choose the desired color. फिर आपको fill color पे जाना है. Click on fill option and choose the desired color. Now select stroke size, style, width from the properties panel and place the pointer on the stage. Click करके hold करना है mouse left button को and drag करना है on the stage. After that, release the mouse button and you will get a rectangle on the stage. Rounded edge rectangle कौन सा होता है? Click on the rectangle tool. Rounded edge होता है जिसमें उसकी जो edges होती है वो rounded होती है. तो आपको rectangle tool को choose करना है. Under rectangle option section आपको enter करना है number from 0 to 100 in rectangle corner radius box in the properties panel. Then drag it on the stage to draw rounded edge rectangle box. ओवल टूल का यूज करते हैं जब भी हमें ओवल, सर्कल, एलिप्स या फिर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना होता है बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स. तो सबसे पहले आप ओवल टूल पे जाओगे. अंडर रेक्टेंगल टूल ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रोक्स एज पर योर चॉइस, सच एज उसका लाइन, थिकनेस ऑफ स्टाइल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल. फिर आप स्ट्रोक कलर चूज करोगे फॉर द आउटलाइन कलरिंग एंड फिल कलर चूज करोगे फॉर इनर कलरिंग. Click and hold down the left mouse button and drag the pointer on the stage. Release the mouse button, you will get the circle shape on the stage. Polystar tool इसका यूज किया जाता है to draw polystar and star shapes by following certain steps. तो क्लिक करना है polystar tool पे. अंडर rectangle tool drop down list, select the properties of strokes and color as per of your choice from the properties panel. फिर आप यूज करोगे tool option section को. Select the type of style, that is star, from the drop down list. Enter the number from 3 to 30 in number of sides box and 0 to 1 in star point size box to specify the depth of the star. Now click and hold the left mouse button and drag it on the stage and release the mouse button. You will get your desired shape like this. Next is pencil tool. Pencil tool का use किया जाता है for free hand drawing line and we can draw free form lines and shapes in same way as we use a real pencil to draw shape. तो इसके पास 3 मोड्स होते हैं, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक. स्ट्रेटन क्या करता है, ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है. दिस मोड ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन्स द लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल टूल. ये क्रिएट करता है एजेस ऑन ईच टर्न फेस ऑफ
लाइन। स्मूथ मोड स्मूथ कर देता है जर्क्स ऑफ द एजेस। इंक मोड को यूज किया जाता है टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग विद नो मॉडिफिकेशन अप्लाई। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज पेंसिल टूल। आपको पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल बार। Select the stroke, style, color, height from the properties panel and click and draw the line. पेन टूल का यूज किया जाता है जब भी हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस या कर्व्स को कंस्ट्रक्ट करना है इन ओपन और क्लोज शेप बाय प्लेसिंग एंकर पॉइंट्स जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वी कैन एडजस्ट द टाइप ऑफ पॉइंट्स एंड एंगल ऑफ कर्व्स। वी कैन आल्सो ऐड, डिलीट एंड रिपोजिशन दी पॉइंट्स। देयर आर टू मेथड्स फॉर ड्राइंग विद पेन टूल। सबसे पहले आता है ओपन पाथ। तो हमें डबल क्लिक करना है लास्ट पॉइंट को एंड कंट्रोल क्लिक एनीवेयर अवे फ्रॉम दी पाथ। चूज अ पाथ, उसमें हम पोजीशन करते हैं पेन ओवर द फर्स्ट, दैट मीन्स हॉलो एंकर पॉइंट। एंड जब वो पोजीशन हो जाता है करेक्टली, एक स्मॉल सर्कल अपीयर होता है नेक्स्ट टू द पेन टिप। क्लिक टू क्लोज। एनिमेट सीसी जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा एक फिल विद कलर वंस द पाथ बिकम्स क्लोज्ड आउटलाइन। तो पेन हैज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स व्हिच आर एज गिवन बिलो। इसका मतलब है नन ऑफ द लाइन स्टार्टेड, यू कैन स्टार्ट एनी ड्राइंग। This means you have started the drawing. This means line connected to each other, and this means the task is completed and you can start new anchor path line. Follow the given steps to use pen tool. Click on the pen tool from toolbar. फिर properties panel में जाना है, उसकी color, thickness, line style of your choice को choose करना है. Click on stage to define the anchor 1. Now click to create the next anchor point 2, 3, 4, 5 and so on. Again click on the point 1 to close the drawing. इरेजर टूल का हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई अनवांटेड एरियाज या फिर ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना होता है फ्रॉम द स्टेज। एंड डिफरेंट इरेजर मोड्स मॉडिफायर होते हैं हमारे पास। इरेज नॉर्मल को यूज किया जाता है टू इरेज ऑल द लाइंस इन फिल्स वेयरएवर द इरेजर इज मूव्ड। इरेज फिल को यूज किया जाता है टू ओनली इरेज द फिल कलर व्हाइल लाइंस आर अनअफेक्टेड। इरेज द सिलेक्टेड फिल्स को यूज किया जाता है टू इरेज द सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इरेज इनसाइड का यूज किया जाता है टू इरेज इनर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Also, we have some shortcut keys. Y for pencil tool, E for eraser tool, O for oval tool, and P for pen tool. We have certain steps to use the eraser tool. सबसे पहले हम eraser tool को select करना है. Click on the drop down arrow on the eraser mode modifier and select the required eraser. Then click on the eraser shape modifier from drop down checkbox arrow and select the eraser shape and size of your requirement. Click and drag the pointer on the object to erase. फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल। इसका यूज किया जाता है टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ये अलाउ करता है आपको टू ऐड एंड इंसर्ट टेक्स्ट इन योर एनिमेशन। फॉलो सर्टेन स्टेप्स फॉर टेक्स्ट टूल। सबसे पहले आप टेक्स्ट टूल को चूज करोगे बाय क्लिकिंग इट। प्रॉपर्टीज में से जाके उसकी प्रॉपर्टीज, कलर, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, इन सब चीजों को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करोगे। देन क्लिक ऑन एनी प्लेस ऑन द स्टेज टू गेट द कर्सर एंड टाइप द टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है एंड मूव करता है इन द सेम वे एज यू वांट टू मूव द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। नाउ selection tools. In Animate CC, 4 main selection tools are present: selection tool, sub-selection tool, free transform tool and lasso tool. Selection tool का यूज किया जाता है जब भी हमें किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऑन द स्टेज बाय सिंगल क्लिक। नाउ सब सिलेक्शन टूल को यूज किया जाता है जब भी हमें नोड्स ऑफ ड्राइंग या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अलाउ करता है टू मेक सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन यू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विद दिस टूल एंड मूव द माउस ओवर डिफरेंट स्पॉट। तो आप देखोगे दैट द माउस कर्सर चेंजेस इट्स शेप। एंड लैसो टूल का यूज किया जाता है टू सेलेक्ट फ्री हैंडलिंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द ड्राइंग और एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज लेसो टूल। आप लेसो टूल को क्लिक करोगे, क्लिक और ड्रैग करोगे टूल को अराउंड द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट until you reach that point from where you have started. Release the mouse button, your object will be selected. The next we have coloring tools. सबसे पहले आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल को यूजुअली यूज किया जाता है to fill or color any object with desired colors and we can also modify उसकी thickness and stroke shape. कुछ ब्रश टूल ऑप्शंस होते हैं जैसे पेंट नॉर्मल, जिसको हम यूज करते हैं टू पेंट ओवर लाइंस एंड फिल्स। पेंट फिल्स टू फिल एन एम्प्टी एरिया। पेंट बिहाइंड टू पेंट ब्लैंक एरिया ऑन द स्टेज लीविंग लाइंस। पेंट सिलेक्शन टू अप्लाई न्यू फिल टू द सिलेक्शन।
Paint inside is used to paint only fills and doesn't allow you to paint outside the lines. Also, we have some shortcut keys. Press V for selection tool, A to use sub-selection tool, Q for free transform tool, L for lasso tool and B for brush tool. And we have certain steps to use brush tool. सबसे पहले brush tool select करना है, then click on drop down arrow on brush mode and select the required brush. Click on the drop down arrow on brush shape and select the required brush shape. Click on the drop down arrow on brush size and select the required brush size. Then click and draw it on the page. Next is paint bucket tool. Paint bucket tool add करता है एक fill inside a shape और change करता है color of the fill. तो ये also fill or closes the areas that are not completely closed. Follow the given steps to use paint bucket tool. एक object आपको draw करना है. Click on paint bucket tool. Click on colors drop down arrow and choose the color and click on the object on the stage. फिर आता है इंक बॉटल टूल जिसका हम यूज करते हैं टू चेंज द स्ट्रोक कलर विद स्टाइल ऑफ लाइंस और आउटलाइंस ऑफ द शेप. तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, फिर आपको क्लिक करना है इंक बॉटल टूल पे, सिलेक्ट करनी है उसकी प्रॉपर्टीज जैसे उसका कलर, स्टाइल, थिकनेस, लाइंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल. फिर आप क्लिक करोगे अपने लाइन पे या ऑब्जेक्ट पे एंड योर ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड. व्हाट इज ग्रेडियंट फिल? ग्रेडियंट एक मल्टी कलर फिल होता है इन विच वन कलर जो है वो ग्रेजुअली चेंज करता है इनटू अनदर कलर. इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कलर्स इन एन ऑब्जेक्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स इन एनिमेट सीसी विच आर गिवन बिलो. एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, एक होता है रेडियल ग्रेडियंट. तो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो चेंज करता है कलर इन वन डायरेक्शन एंड रेडियल ग्रेडियंट जो है ये चेंज करता है कलर इन सर्कुलर डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. You can adjust the direction of the gradient, uska color, location of the focal point and many other properties of the gradient. Applying gradient fill, तो आपको सबसे पहले select करना है एक rectangle using selection tool. Click on the window, then color option to display color panel. From the color type drop down list, choose either linear gradient या फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो रेडियल ग्रेडियंट ऑप्शन. then double click on the left pointer bar and the color palette appears. Select the yellow color. Select the right pointer. The color palette appears. Choose the yellow color. Under the flow section आपको क्या करना है, select करना है कोई भी mode again amongst, extend, reflect and repeat. Adjust the color blends of the gradient by moving the pointers closer to each other or further apart. Now let's revise the chapter. Adobe Animate Creative Cloud is a software package that allows users to create animated work. Timeline is used to set sequence of the movie, which helps users to view the sequence of events and it stays on the top of stage. Properties panel is a set of various elements. Rectangle tool is used to create squares and rectangles. Pencil tool has three modes: straight and smooth and ink. Lasso tool is used to select free handling of any area of drawing or an object on the stage. Gradient is a multicolor fill in which one color gradually changes into another color. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. The panel which is used to modify the color and thickness of the line is properties panel. Area on the animate interface which shows the elements of your project. Stage. Tool used to draw circles, ovals, ellipses. Oval tool. Polystar tool helps us to draw stars and polystars, both A and B. Let's do fill in the blanks. Animate CC is a multimedia software developed by Adobe. Dash contains commands and functions. Menu bar. Dash is used to set the sequence of the movie which helps user to view the sequence of events. Timeline. Polystar tool is present under the star tool drop down list. Dash is used to erase inner part of an object. Erase fills. Subselection tool is used to select dash of drawing or an object on the stage. Let's do true false. Making a cartoon movie and different animations with small steps to create full movie animation is possible in Animate CC. True. We cannot create a curved line in Animate CC. False.
By oval tool, we can draw only oval shape. False. Pencil tool has three modes. False. Paint fill brush is used to paint over lines and fills. So students, this was your complete chapter about Adobe Animate. I hope the chapter is clear to you. Do revise the chapter once again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.